So in today's session, we're going to talk about how you can fetch the input from users. Okay, so till now in our traditional system of writing the codes, what you're doing is, let's say x equals to 35 and y equals to, let's say, 12, or I can say 15, and then if I try to print this x plus y, I will get the answer as expected. I don't know what, 50. ओके सो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, हम यूजर से ही इनपुट ले रहे हैं, लाइक यूजर से नहीं ले रहे, हम खुद डिफाइन करें और उसके करस्पॉन्डिंग हम उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और दुनिया भर की सारी चीजें करा पा रहे हैं. बट व्हाट इफ आई वांट द यूजर टू गिव द इनपुट. ओके, सो जब यूजर को यह वैल्यू देनी होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज विल सिंपली से input. Okay, input, and then inside that I want the user to give something. Okay, so user को कुछ देना है तो क्या देना है, तो मुझे एड्रेस करना होगा उसे क्या देना है, तो I will say enter a number और I can say enter num1. okay, और सेकंड टाइम क्या करना है, मुझे यूजर को वापस से ही इनपुट लेना है यूजर से, है ना, और मुझे उसे डिफाइन कर देना है enter a num2. okay, so now if I try to print this, I try to run this, you can see over here I can write something over here. Let's say I write 12 over here, and then I have one more time, I can write one more time. Let's say second number is 18. okay, so the answer will be 30, and you can see over here the answer is 12 and 18. Why is this case? Okay, so that's really weird, and I just added the numbers properly and there is no mistake in this program, but then why still I'm getting 12 and 18? Well, see, when you store something with the help of input, when you fetch something from the help of input, initially by default the things are getting in form of a string. Okay, what is string? String is a collection of arrays like Mayank, collection of characters. Okay, like Mayank, anything like this, all symbols you can see over here. This all about strings. okay, so string जो होती है उसमें हम ऐड नहीं कर सकते, obviously बात है. हम उसे ऐड अगर करने भी जाएंगे तो क्या होगा, दो स्ट्रिंग आपस में साथ में कनेक्ट हो जाएगी. तो वैसे यहाँ पर हो रहा है, पहले 12 कनेक्ट हो रही है, फिर 18 कनेक्ट हो रही है. बट अगर मुझे इसे वाकई में ऐड करना है, व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर बाय यूजिंग दिस. ओके, सो अब क्या होगा, अब मेरा जो x है वो एक इंटीजर बन चुका है. ठीक है, अब वो एक स्ट्रिंग नहीं रह गया, अब वो एक इंटीजर बन गया. नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट दिस, आई ट्राई टू रन दिस, यू कैन सी मैं फर्स्ट अगर 12 लिखता हूँ और अब मैं लिखता हूँ 18, सो आई विल गेट द आंसर एज 30. ओके, एज एक्सपेक्टेड. ओके, नो प्रॉब्लम. बट लेट्स से आई वांट no, that's all for today. That's all. Okay, not for today. We'll talk about some more stuff. So that's how you can add two numbers. Okay, we can take the input from user and then we can add two numbers. But what if I want to fetch my name or anyone's name? What I will do is, let's say name equals to input, and then we'll ask for name. Okay, so enter your name. That's very simple. Enter your name. Let's say my name is Mayank, so I will enter Mayank. Your name is something, you will add something. Okay, so now let's say I want to print this. Like let's say I want to print hello Mayank, so it'll be like hello name plus, let's say, Mayank. Okay, so that's my name and this sign. Okay, so that's how I will print this. Okay, so now let's try to run this and let's print Mayank. Okay, so you will get hello Mayank, है ना. और आप यहाँ पर एक थोड़ी सी स्पेस छोड़ सकते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं वापस लिखता हूँ Mayank, so you can see hello. Okay, spelling mistake. वही वापस रन कर देते हैं, है ना. So now if I try to print this, you can see it is showing hello Mayank. But what if I want to print my age also? Okay, so what I'll do is I'll simply say age equals to input, and age को हम स्टोर करने के लिए enter your age लिखेंगे और हमारी एज इसके अंदर स्टोर हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या करना है, मुझे लिखना है you are बाद में प्लस एज, है ना. you are 19, 18, whatever you are. okay, so और एक और बार मुझे एक्सक्लेमेशन सिंबल का यूज करना होगा. ठीक है, तो अब मैं जब इसे रन करता हूँ, मिस्टेक क्या आ रही है. ओके, यहाँ पर प्लस सिंबल का यूज किया. And now if I try to print this, let's say my name is Mayank and my age is 19. Okay, so you'll get the outcome as hello Mayank, you are 19. Okay, that's really amazing, and that's all for today. This is how you can fetch the values from the user. Okay, so thanks for watching this video. Have a nice day. Bye bye.